हेलो गाइस, सो वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, आपने आज तक मुझे बहुत सारी मूवी रिव्यूज़ करते हुए देखा है, बहुत सारी टीजर ट्रेलर रिएक्शंस, वेब सीरीज रिव्यूज़ करते हुए देखा है, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स क्रैक करते हुए देखा है। बट दिस इज समथिंग अबाउट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे तो आप थंबनेल देख चुके हैं वीडियो का क्या होने वाला है, बट अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ सो वो पार्ट नहीं आया थंबनेल वाला। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द वीडियो। सो गाइस, दिस इज माई डेब्यू इंटरव्यू एज अ होस्ट। और यहाँ पर मेरी जो गेस्ट हैं, पहली गेस्ट ऑन द लास्ट रिव्यू चैनल गाइस, दैट इज श्रीयम भगनानी एके तान्या मेहता फ्रॉम COD 2, यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2। सो गाइस, सिटी ऑफ ड्रीम्स बहुत लोगों ने देखी है, काफी ज्यादा सुपरहिट शो रहा है ये लास्ट मंथ में और धूम मचाई मतलब इस शो ने। और इस नए सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड ऑन किए गए, जिसमें से मेरा फेवरेट था तान्या मेहता, जो कि रमनीक भाई की बेटी थी, और मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोली थी। तो उनमें से सबसे पहला जो चेहरा जो मेरा फेवरेट है, दैट इज तान्या, रमनीक भाई की डॉटर। व्हाट अ कैरेक्टर शी हैज प्लेड, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी किया उसने, एंड पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे बड़ी बात। सो गाइस, अगर आपने भी मेरी तरह तान्या मेहता का कैरेक्टर नोटिस किया और आपने उसे लाइक किया, सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। मतलब जानेंगे कि तान्या मेहता यानी कि श्रीयम भगनानी रियल लाइफ में कैसी है, कितनी अलग है तान्या मेहता से, या उनकी क्या हॉबीज हैं, और बहुत फन होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है हमारी पहली गेस्ट श्रीयम भगनानी एके तान्या मेहता। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Shriyam, are you free now? Yes. Okay, so how are you? I'm good, Inderjeet. How are you? I'm also good, and you are looking very Finally. very beautiful today. Thank you. You're also looking really nice. I really like your specs. Oh, thank you. वैसे मुझे आपको ये बात बोलनी नहीं थी, लेकिन यार वो एंगेजमेंट वाले सीन में जब अरविंद आपको ये बात नहीं बोलता, so I felt very bad कि यार how rude. Thank you. Thank you. So that very moment I decided कि मैं जब भी आपसे मिला कभी लाइफ में, तो मैं ये आपको डेफिनेटली बोलने वाला हूँ। Thank you. Thank you. सो श्रीयम, कैसा लग रहा है फिर आपको एक इतनी बड़ी सीरीज के अंदर एक इतना इम्पैक्टिंग रोल करने के बाद? So honestly, I don't think अभी तक मुझे वो फील हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक of course messages आ रहे हैं, of course आप जैसे रिव्यूअर हो, जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो अच्छी बातें कह रहे हैं, but at this moment it's very too good to be true moment for me, where things are happening and they're finally happening after 5 years of me being in the industry. So I'm just taking it slow. Okay, is it happening, kind of in that sense, but at the same time it feels very good. It feels very good that people are I already expected कि of course तान्या का जो कैरेक्टर है वो इतनी अच्छी तरह से लिखा है नागेश सर और रोहित सर ने, तो वो लोगों को पसंद तो आएगा ही, बट उसके साथ मैं भी पसंद आ रही हूँ। that's a total bonus. नहीं, आपने वो कैरेक्टर सीरियसली काफी, मतलब एक भी जगह मुझे ये नहीं लगा कि ये लड़की तान्या नहीं है। सीरियसली यू आर क्वाइट इम्पैक्टिंग, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और मुझे उससे पहले मैंने आपको नोटिस नहीं किया था, 32 किलोमीटर चालू मैंने देखी हुई थी, बट जब तान्या को मैंने देखा, मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी स्पेशली ये चीज़ मेंशन की थी कि जो भी नए कैरेक्टर्स इस वाले सीजन में आए हैं, सो तान्या इज माय मोस्ट फेवरेट वन। यस, एंड थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि वो सीरियसली काफी ज्यादा इंपैक्टिंग कैरेक्टर था, और आपने उतने ही इनोसेंस से निभाया भी। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, या मुझे ही कह लीजिए या फिर आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि हु इज श्रीयम इन हर रियल लाइफ। मतलब आप कैसे एक पर्सन, एज अ पर्सन श्रीयम कैसी है? शाय है, काफी चिल आउट करने वाली है, या कैसी है, या तान्या मेहता से मिलती जुलती है? So, ये डिस्क्राइब करना एक आंसर में तो मुश्किल है कि खुद को पूरा डिस्क्राइब कर पाऊँ, या फिर तान्या से डिस्क्रिमिनेट कर पाऊँ उसको खुद को, बट आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो मुझ में तान्या में सिमिलर है, जो मुझे इजी हुआ प्ले करने के लिए तान्या को। एक चीज है जो तान्या 2 बार 3 बार कहती है, दैट उसे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। तो मैं भी आई काइंड ऑफ एम ऑन द सेम बोट, वेयर मुझे नहीं पसंद है अगर कोई झूठ बोलता है, तो आई आल्सो ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। दैट इज वन सिमिलैरिटी दैट वी हैव। सेकंड सिमिलैरिटी दैट वी हैव इज दैट वी आर बोथ वेरी क्लोज टू आवर फादर्स। मैं भी अपने पापा से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, so I think that is something that helped me play the relationship with Shishir sir in the show. And differences बहुत सारे, I think I think Tanya is very innocent also. जैसे वो
बहुत पेशेंस है उसमें, बहुत पेशेंस है, कुछ नहीं बोलती है इतने दिन तक, कुछ नहीं बोलती, लास्ट में जाके शी इज लाइक okay, now this is it, you know. So I think I speak somewhat, like there are a lot of differences that way, but yeah, like when it comes to me, I think I'm a very shy person. I'm an introvert. Like if you see, I hardly post pictures, or this is like a struggle for me right now. Like, you know, the team is like, okay, you have to post pictures now. So that is a very new thing to me. And Tanya loves getting ready. That is something that I'm learning. ओके, दैट्स गुड। तान्या का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वैसे अगर मैं अरविंद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो भी आपके उसके साथ फ्रेम्स में हो आप, तो वहाँ पर काफ़ी शाय रहती है, वो एक बैक स्टेप पर रहती है, जबकि वो रमनीक भाई की बेटी है। शी इज़ रिच इनफ, और ऊपर से जब वो उसकी जो पर्सनल लाइफ चल रही है, जो उसकी दुनिया है तान्या की, वो काफ़ी अलग है। वहाँ पर वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी है वो। तो वो अरविंद के साथ कुछ भी ऐसा डिसीजन क्यों नहीं ले पाती, उसे क्यों नहीं बोल पाती, जबकि उसे पता है कैफे वाले सीन के अंदर कि अरविंद एक वुमेनाइजर भी है और वो थोड़ा अलग भी है उससे, तो वो क्यों नहीं बोलती? So I had the same question. Okay, like जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मेरा सेम क्वेश्चन था नकी सर से. बट तानिया इज लाइक अ पर्सन, जो वो काम भी करती है. In my opinion, she had like in my preparation, she had a savior complex. Savior complex मतलब उसको लोगों को बचाना पसंद है. She loves, helping people, saving people. But this was entirely my preparation in my head that I have to give it a justice. Why, she is doing this. But Nagesa said the same thing, that she really likes Arvind. She really, there has been like, they've known each other for years probably, seen each other in parties and stuff. And she really likes him and she thinks that she can make it work. So that is something that was Tanya's thing. But in the end, she's like, no, this is something that is out of my league as well and I can't get into this. Okay. And that was the best moment for me. जब आप अरविंद को छोड़ के चले जाते हो, थोड़ा सा वो हार्ट ब्रेकिंग भी था मेरे लिए. बट यस, उसने आपको शुरू में ब्यूटीफुल नहीं बोला, इस चीज़ का बदला बहुत सही था वो. Truly, like I think that scene, a lot of people are liking that, the breakup scene, and it was like, it was like कि मतलब अंदर से even I wanted कि हाँ तानिया breakup करो, like this guy does not deserve you. But then in that scene, I think also Arvind completely changed. Like he had a complete change of heart. So you never jail chala gaya. Yeah, that was good. When did you think and decide to be an actor? And what was your inspiration behind that? So you're calling me Tanya now? Oh, sorry. Yeah, Shriyam. So when did I decide to become an actor? एक बार actually मैं कॉलेज में थी, मैं पहले टेनिस खेलती थी और मैंने टेनिस रिसेंटली छोड़ा था. कॉलेज में मैं ऑफ कोर्स पढ़ाई में वगैरह में ध्यान दे रही थी और मैं कॉलेज में बीकॉम कर रही थी और मन तो लगता नहीं था पढ़ाई में ज्यादा, बिकॉज नंबर्स वगैरह मुझे आज भी नहीं समझ में आते ज्यादा. तो मैं एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी कॉलेज में. आई स्टार्टेड दिस फॉर्मिंग कमिटीज एंड फेस्ट वगैरह में ज्यादा घुस गई और उस एक किसी इवेंट के उसमें लाइक एज अ पार्ट ऑफ द कोर कमिटी हमें एक प्ले परफॉर्म करना था. लाइक इट वाज गिवन, लाइक हमें ऑर्डर्स, हमें टीचर्स ने बोला था कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एक प्ले एज द कमिटी. और तब तक तो हमारे स्कूल में ड्रामा कोई वो नहीं था, हमारे कॉलेज में कोई ड्रामा कमिटी या ड्रामा सोसाइटी नहीं था. तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म द प्ले और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुझसे नहीं होगा, बहुत खराब था एंड दिस एंड दैट. एंड आई गॉट इंट्रिग्ड, ये क्या चीज है जो मतलब इतना खराब कर दिया मैंने कि ये एक्चुअली करना कैसे है. Then I started learning about it. I started joining classes. मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया कोलकाता में और मैंने और पढ़ने की कोशिश की. मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जितने भी अवेलेबल थे उस टाइम पे और जितना मैं सीखती गई उतना मैं रियलाइज किया मैंने कि इस लर्निंग का कोई एंड है ही नहीं. And that is when I realized this is something that I can do for life because at every given stage I can learn more. So that was very exciting for me. और आपने बहुत सही चीज चुनी. Thank you. Yeah. आपने भी बहुत सही चीज चुनी है. मैंने आपके काफी रिव्यूज देखे. Oh, thank you for. You've really grown in the last few months, and I think I really wish that you grow more. Thank you.
और इस इंटरव्यू के बाद आई विश कि ये काफ़ी अच्छा चले एंड I wish you get many more interviews, या थैंक यू आई many ट्राई more टू डू. people. तो आफ्टर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर लाइक तान्या, ये आपको रियल लाइफ में भी किसी तरह से चेंज करता है? It does. It does. Because more than anything else, Tanya is very inspiring. You know, the thing that she's doing, I think our country is fighting to do for a long time now. Yeah. You know, I'm not trying to say that, that it's not being done efficiently, but हमारी population इतनी huge है that until unless we all take responsibility in our own hands, solving this problem is a big issue because एक एक कोने में क्या हो रहा है we don't know, right? And something that Tanya, the app that she's developed, Fearless, is something that that is what me, Nagesh sir, and Rohit sir, and everyone the other day we were talking that this can actually become an actual app. That people can, take help from or use it and make the situation better. But then, of course, like I said, I'm so bad with numbers. Technology is something that I'm again very bad at. So I don't think I can build a platform. But yes, I was inspired by Tanya in a sense that I wanted to help more people in a way that. So I did start this club called Film Club India. Okay. It started off on Clubhouse. So हम क्या करते हैं, हम try करते हैं that I try to जितना भी अभी तक journey रहा है कि अगर आपको as an actor journey शुरू करना, आपको काम करना है, what exactly do you need to do? Auditions कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं? That's really good. How to get into this entire process. Yeah. So we started off me along with a few friends of mine. We started this initiative and we're working on this in the lockdown. Of course, everybody started working. We're trying to figure out ways to do it. But yes, Tanya did inspire me to do that. Yeah, that's really good. Really good. So how tough was it to crack for you your first role? And what was that role? My first role was Simi in Bagi 2. In Bagi 2? That was my first ever job. Okay. Yes. So I played the character of Simi, which is Disha Patni's character's best friend in college. And that was my first ever character as an actor in front of the camera. My first ever job was in front of the camera was a campaign, of how skincare products have these campaigns jab they interview normal people, they talk to the normal people what do you do and that kind. So that was the first campaign that I did in front of the camera, but as a character was Simi in Bagi 2. And how difficult was it to crack it? So I had just gotten out of my acting school in July, and I was I had मुझे बहुत खराब ग्रेडिंग मिली थी, ठीक है, बिकॉज उसमें डिप्लोमा में मुझे इतनी अच्छी मतलब रैंकिंग नहीं आई थी मेरी. तो मैं बहुत वो हो गई थी कि नहीं अब तो ये करना ही है मुझे. एंड आई पुट इन, सो आई कम फ्रॉम अ स्पेस व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड आई एम लाइक okay, let's make this happen, let's work more, and if I'm not done well, then I need to work more. So I started auditioning full on. I started going to every office, and Bagi 2 happened to be, I didn't know what it was for. When I went for the audition, they just said, we want to test you. Mukesh Chabra's team called me. Kushal from that team, Kushal and Renuka called me from there. And they said, we just want to test you for a character. They didn't give me any scene. They didn't give me anything. Kushal just called me in front of the camera and he's like, okay, this. It was a very improv scene because the character was not written, I think, at that point. And they just auditioned me and I went out of the office. And then immediately, I think within 5 minutes, he called me again and he said, can you please come back? We need another take. And then I went back and I gave another take. The scene at that time was completely different than what actually came out in Bagi 2. But after that, I think half an hour later, I was locked, and it was the most shocking thing for me. Without any preparation, it was actually very easy for me because I had no idea what was happening. And that, it was almost like the industry was calling me in. Okay. वैसे मैंने लास्ट 2 ईयर से कोई मूवी छोड़ी नहीं है थिएटर्स के अंदर, बट बागी 2 अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया था.
क्योंकि वो 2 साल के पहले आई थी, वो 2018 में आई थी। ओके, बट बत्ती गुल मीटर चालू भी तभी आई थी मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और बत्ती गुल बत्ती मीटर गुल चालू मीटर मैंने चालू हुआ देखी थी। था। या बट मैंने कल दोबारा देखा वो सारा सीन जब आप मतलब आते हो वहां पर, और उसके बाद फिर मैंने आपकी वो शॉर्ट फिल्म भी देखी, वो कैब ड्राइवर वाली। तो उसके अंदर कुछ, सनी से रूबरू, यस। हाँ या यो मैंने कल ही देखा वो सब, एज एन R&D। सो मैं देख रहा था कि आपने क्या क्या काम किया है, बट बागी टू मैं फिर भी नहीं देख पाया, सॉरी। नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी, नॉट एट ऑल। अभी भी हॉटस्टार पे है, गो हाँ, बट वॉच आई एम इट। डेफिनेटली गोना वॉच इट नाउ। एक्चुअली सनी से रूबरू की स्टोरी ऐसी है कि वो मैंने एक्चुअली लिखी थी और मैंने बनाने की कोशिश की थी, ओके, यू हैव रिटन बट दैट। I had written the story for Sunny Se Rubaru, ओके, and I had gotten Harish sir, who is the director of the film. ओके, I had got him. I had gone up to him and I was like, I really want to make this film. And क्योंकि हमें उस टाइम पे एक्टर्स नहीं मिले थे, तो हम सब दोस्तों ने मिलके बनाया था वो फिल्म। और हाँ, और लास्ट में कोई लड़की नहीं मिली तो मुझे बैठना पड़ा था। तो that was that part, that situation में हमने ट्राई किया था कुछ बनाने का। ओके। तो थोड़ी सी बातें सीओडी So सीओडी thank के you so बारे में much for करें। watching it. हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो आपने पहला सीजन कब देखा था सिटी ऑफ ड्रीम्स का? क्योंकि मैंने तो अभी देखा था लास्ट मंथ। ओके, सो ऑनेस्टली मैंने फर्स्ट सीजन देखा था व्हेन श्रुति महाजन मैम्स टीम, सिमी, उनका भी नाम सिमी है, उनके असिस्टेंट का, she had called me for the show and I actually did not know about the show because at that time I think I was constantly auditioning or I was doing something, so I was not very active in watching all the shows. And she told me season 2 is coming and Nagesh Sirka, and I did not even know at that point that Nagesh sir had done a show, a web series. And that is when I went and watched and I was like, listen, I have to audition for this. Like, I told her, please, mera audition aap le lo. Like, she had asked me, like, of course they ask you, like, this is the show. If you want to apply for it, then let us know. Then we will take your audition. Okay. So that had happened, and I was blown away. I was like, I really want to be a part of this. Yeah. Show what was ही your इतना reaction dangerous when you saw? Okay. Huh? मैं कहा शो ही इतना What डेंजरस was your reaction? What was your reaction when you saw it for the first time, the first season? My reaction on first season, yeah, it was deadly, amazing. बहुत डेंजरस पॉलिटिकल ड्रामा है ये। लाइक तांडव आई थी अभी लास्ट टाइम ऑन प्राइम वीडियो। तांडव का नाम काफ़ी बड़ा था, उसकी स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी थी, बट लिटरली बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लैट थी वो स्टोरी। ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे जाए उसके या फिर कुछ भी देखा जाए, लेकिन जब मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स देखी मुझे लगा कि यार एक्चुअली मतलब ये सब बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है आर्ट। सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर वो सब चीज़ें थी जो एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा के अंदर होनी चाहिए थी, एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज नेल्ड इट सीरियसली। Very true, very true, very true. Like all the other actors. So मैंने तांडव नहीं देखा है तो मैं बता नहीं पाऊंगी. Like I can't make like a clear comparison. But of course आपने देखा है तो आप बोल सकते हो. But I really feel like every single actor, in this series, like the smallest of frames, even the actor, if the actor is coming for 2 scenes, I think they've done a phenomenal job. It was great series. Seriously, I'm very excited for season 3. सेम, कहाँ गई पूर्णिमा? कहाँ है? एग्जैक्टली यही चल रहा है। सो क्या सीजन 3 के अंदर हम देख पाएंगे आपको? For that you'll have to ask the writers of the show. They're currently writing season 3 and you have to talk to them. If they are writing season 3. ओके, क्योंकि फर्स्ट सीजन के अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जो सेकंड सीजन के अंदर कंप्लीटली मिसिंग है, मतलब वो थे ही नहीं, उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी थी। सो मुझे यही है कि तान्या की स्टोरी भी क्या खत्म हो गई है? You'll have to ask. So go on Twitter. There's Rohit Banavlikar sir. There is Nagesh sir also on. I think he's not on Twitter. He's on Instagram. You can go and ask him. Okay. Maybe they have an answer. बट लिटरली मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है और जिस तरह से तान्या मेहता की बातें हो रही हैं, एंड अगेन शी इज रमनीक भाई's डॉटर, तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा तान्या के कैरेक्टर को लेकर। What do you think Tanya is going to do next? But I am thinking like तान्या इतना कुछ स्टार्ट कर रही थी, उसने एक स्टार्टअप किया था, वहां से वो किसी भी तरह से हेल्प कर सकती है ना आगे, पूर्णिमा गायकवाड़ की।
तो मुझे लगता है कि जो भी उसने स्टार्टअप किया था उसको लेकर कुछ आगे बड़ा किया जा सकता है. ट्रू. हाँ, एंड अरविंद? बट लिटरली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, सो एकदम आपने क्वेश्चन पूछ लिया. बट ये आई हैव टू थिंक अबाउट इट. So the best moment on the set of COD2 for you. The best moment. Best moment. If you I think remember it any. has to be the. I think for me it has to be. Of course, off screen it was a lot of fun, right? Like, matlab, there are so many people who are not even mentioned in like most of course, like, with the team, there are such a big a team we had. Like, apna costume department mein we had Aparna ma'am, we had Bhagyashri, and we had like, in the ED team, like the assistants team, we had Tushar, we had Afi sir, we had, Aniket sir, so many people that off screen we were so a bunch of like friends. We were like chilling and talking and having fun and joking around, of course away from the set, but it was a very fun experience. Of course, the producer Elahi ma'am, and there are so many people, I can't even possibly name everyone like right now, but there are so many people जो screen पर नहीं दिखे हैं, but इतना अच्छा उन्होंने माहौल बना के रखा था set पे that there wasn't even one day जब मैं सेट पे जाती थी और मुझे लगता था कि अच्छा मैं वैनिटी में बैठ जाऊँ. मुझे लगता था बस वहीं पे रहती हूँ, बट कुछ ना कुछ चल ही रहा है और मजा ही आता था हर समय. तो वैसे बहुत सही था. बट इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑन स्क्रीन, आई थिंक जो सामने में, आई थिंक द 2 scenes that I enjoyed the most, actually 3 scenes that I enjoyed the most shooting was, first is the Shanti scene, of course. The first one. When Tanya becomes Shanti and she saves the girl, I think that was that thing that I'm never good, probably like and right now अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और पता नहीं फ्यूचर में some, I hope I get the opportunity to save somebody someday, but पता नहीं ऐसा कब हो मेरे साथ. So that was a very fun scene to shoot, all the more because Arvind was so scared. It was actually fun for me. पता नहीं क्यों मुझे मजा आ रहा था. But also 2 other scenes that I had a lot of fun shooting was the confrontation scene with my father at home, and the breakup scene with Arvind. I think those 2 scenes were the scenes where we got to, like, we felt those scenes, like even Shashir sir and me and even Ankur and me, we really like we were there in those scenes. Yeah, those are very well planned and very well executed scenes, I would say. Very well written scenes also. Yeah. अगर आप एक एक्ट्रेस ना होती तो फिर क्या होती? मैं एक्ट्रेस ना होती तो मुझे पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक्टिंग भी ऐसे एक्चुअली मैंने उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने एक्टिंग एक बार में चूज कर लिया, उसके बाद भी मैंने काफी इधर उधर काम किया. मैंने काफी असिस्टेंट मैंने काम किया है, as a director's assistant, as an assistant director, as a clap artist, as an assistant editor. तो मैंने काफी segments में काम किया and finally I got to this realization, नहीं, acting is made for me. अगर मैं acting नहीं कर रही होती तो मैं शायद कुछ और ही try कर रही होती और कहीं पे रुक जाती जहाँ मन लगता. तो thankfully यहाँ मन लग गया, मैं रुक गई. नहीं, you are made for acting. आप अगर रिव्यूअर नहीं होते तो क्या बनते? I'm already a graphic designer. Oh, you are? Yeah, I am. That's amazing. Yeah, I'm a graphic designer. Here's my system. Oh, that's amazing. Yeah. So मैं ये मतलब मेरा पैशन है बॉलीवुड, तो बॉलीवुड को मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि किसी तरह से फॉलो करूं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया. बट मतलब मैं कोमल नाटा जी को काफ़ी सुनता था. मुझे था कि कोमल नाटा जी के रिव्यूज़ देखने, फिर उनके जो भी उनकी रिकमेंडेशन होती थी उसके ऊपर मूवीज़ देखने जाना. सो वन डे आई वॉज थिंकिंग लाइक यार मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, तो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ पता थी, थोड़ी सी बिल्कुल. और मैं जो भी सोचता था मूवीज़ के बारे में, जब मैं देखता था मूवीज़ के बारे में, तो मैं बात नहीं कर सकता था किसी से, क्योंकि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट हीरो सॉन्ग्स, मैक्सिमम एक्ट्रेस. लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब डायरेक्टर्स की नॉलेज होती थी, मुझे प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में पता होता था, मुझे पता होता था कि देयर इज़ अ सिनेमेटोग्राफर बिहाइंड दिस कैमरा, थोड़ा सा मुझे पता था. तो दैट्स वाई आई एम हियर इन दिस फील्ड. सो इट्स माई पैशन आई एम फॉलोइंग. That's amazing. That's amazing. No wonder your, graphics and visuals are so nice, like with all your logos and everything.
No wonder. Who is your favorite Bollywood director? Except Nagesh Kukunur. There is not one favorite, there Okay. cannot be one favorite, because there are so many people right now, especially with everybody coming on OTT as well. सब इतना अच्छा content create कर रहे हैं, and इतना varied content create कर रहे हैं, it's very difficult to choose. Like अब तो मतलब आप अगर पूछोगे कौन अच्छा नहीं है, उसमें भी choose करने में मुझे time लगेगा, because actual में सब अच्छा काम कर रहे हैं. नहीं, बट एक होता है ना कि एक क्रोनोलॉजी सेट होती है बंदे की, मुझे इस बंदे की मूवीज जाना पसंद आती हैं, इस डायरेक्टर की मूवीज जाना पसंद आती हैं, सो ऐसा कुछ होता है. So, of course, cult, Yash's Dharma is something that हम सब relate कर पाते हैं, हमको सबको पसंद है. But these are production houses, right? Yeah. But again, there are so many directors like Sanjay Leela Bhansali sir is there, Vishal Bhardwaj sir is there, Anurag Kashyap sir is there, Imtiaz Ali sir is there, like everybody, Raju Hirani sir is there. Like, of course, all these filmmakers are like, these are all like, you can't even choose like, oh, this person is like better than the other, because उन सबका genre कितना different है, right? So I just feel like as directors, storytelling medium is like, their director's medium, like OTT or movies. So if they are making something, they create their own worlds, their own characters, and सब एक दूसरे से इतने different है यार, मुझे सभी intriguing लगता है. जैसे अनुराग बासु सर है, शुजीत सरकार सर है, दिवाकर बैनर्जी सर, like again a very varied genre of films and content that these people make. So for me, it's very difficult to choose. It's like choosing between actors. If you ask me my favorite actor, again, I have no favorite actor, because again, it's art. Art is subjective and everything is so different. Exactly. And my favorite is this man. Imtiaz Ali sir has to be. Yeah. I love this man. Tamasha Gang. Yeah, for Rockstar, for Tamasha, for Love Aajkal, for Highway. Yeah. So any upcoming projects you are doing? I am testing for a few projects. I should be able to announce them soon. Let's see. Okay. वैसे आपने इतना डिफिकल्ट रास्ता क्यों चुना? आपके पास एक पूजा एंटरटेनमेंट नाम का इतना बड़ा बैनर था, सो आप वहां से भी लॉन्च हो सकती थी बड़ी इजीली. So for me, it was like I said, it's not something that I chose. You know, अब मैंने जब शुरू किया था, एक कॉन्वर्सेशन नहीं एग्जिस्ट करता था तब, उस टाइम पर 5 साल पहले. सो मेरे लिए इट वाज मोर लाइक, जैसे मैंने बोला, मैं फिगर आउट कर रही थी. मैं एज एन एडिटर काम कर रही थी, एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी. मैं फिगर आउट कर रही थी कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ. तो जितना मैं सीख रही थी, उतना मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो अभी थोड़ा और सीख लेती हूँ, फिर शायद मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी अच्छा मुझे ऐसा है. बट मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला, मैं एक्टिंग स्कूल से निकली, 2 महीने के अंदर मुझे बागी टू मिली. तो आई जस्ट रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली एंड ओनली योर क्राफ्ट. इट इज ओनली योर हार्ड वर्क एंड योर ऑडिशन जो आपको काम दिलाएगा. सो इट वाज नेवर एन एफर्ट टू not to take this decision or to take this decision. It was just how things came out to be for me. Your destiny. Exactly, entirely my destiny. But I do test for all projects, like for every single production house, for every single director. There is no like ये नहीं करना या ये करना. I'm open to I'm an artist. Yeah, an artist open to the world. Yeah. Exactly. The best compliment you have received after Tanya Mehta, ये पोर्ट्रे करने के बाद. Best compliment I've received. Yeah. I think somebody who I don't like labeling people, but like somebody who was from the I don't know if it's a community, I don't know, but this person was also like Tanya's size, in terms of Tanya's size, and she reached out to me and she said that you played this character, like she really saw herself in Tanya. And the fact that Tanya didn't care that Arvind was rich or good looking or any of that, but kept her self-respect way more than anything else, and broke up with him. And
the fact that she says that you think that मैं मोटी हूँ तो मेरी कोई self respect नहीं है, that I think touched a lot of people. Exactly. And a few people from that, again, I don't want to call it a community, but people from those people, they reached out to me, and yeah, that felt very good, that they felt empowered in a way. Yeah, that was really good thing कि तान्या को इस तरह का दिखाया गया, और इस तरह का दिखाने के बावजूद उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाया गया, और अपने डिसीजन वो खुद लेती थी, अपनी लाइफ को खुद चला रही थी. सो मुझे ये चीज़ उस टाइम भी लग रही थी कि दैट्स वाई उन्होंने तान्या को इस तरह का दिखाया. और अरविंद दूसरी तरफ, अरविंद एक कूल डूड टाइप लड़का, लेकिन फिर भी तान्या हैज हर ओन चॉइसेस. या दैट वाज क्वाइट गुड. So recent show you have binge watched? Recent show that I've binge watched, City of Dreams 2. I watched it twice. Okay, good. So the Bollywood character you wish you had played? Bollywood, so many characters. Anyone that I wish I would have played. But no, soon I think everybody who's played the characters, they've done it so well. That's why I wanted to play them. But yeah, something like I think something like Johnny Depp from like Pirates of the Caribbean, or Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Yeah, you watch a lot of Hollywood movies, I know. No, so Johnny Depp is somebody who really inspired me, like while I was on this journey of like learning about acting, and his characters really inspires me. So something like what he does. So the movie you have seen 5+ times? मुझसे शादी करोगी. I think I find it very fun. Really? Akshay Kumar. I really like Akshay Kumar in it. Is damn funny. I've seen it more than like 50 times, I think. Oh my god. Also Hera Fairy, yeah. Like all the comedies. Yeah, Hera Fairy is different thing. Yeah. Your best dialogue from COD 2? My most favorite dialogue from COD 2 is the same, like मैं मोटी हूँ तो क्या मेरी कोई self respect नहीं है. Okay. Mountains or beaches? Mountains or beaches, I recently said it somewhere. I know वो मतलब सही में हो नहीं रहा है. But I love mountains, but मुझे ठंड बहुत लगती है, तो mountains with beach weather. Place you wish to visit? Place I wish to visit. So many. मैं actually बहुत कम travel की हूँ. मैं ज़्यादा नहीं हूँ, तो काफी सारी जगह है जो मैं गई नहीं हूँ. But यूरोप मुझे बहुत मन है जाने का. मैं कभी कॉर्सिका जाना फिर. Let's see. हाँ जी. कॉर्सिका जाना फिर. क्या? कॉर्सिका. Yes. 5 days in Corsica. Exactly. So morning person or night person? Morning person, it depends. Like on work days, I'm a morning person. And when there's no work, like I'm more like into writing and stuff, then I'm a night person. Okay. Best character from COD 2 cast, the whole cast. Your best favorite character? Oh, yeah. I really like so many people, but so many. But I love Purushottam's character. I was crying when I really right now also have goosebumps. Like I was very sad. Like I met Sandeep sir also the other day, and I'm like, why? I'm like, why? Like so I was really sad. I really like Purushottam's character. फर्स्ट सीजन के अंदर मुझे भी लग रहा था कि पुरुषोत्तम का कैरेक्टर मतलब इतना मिस्टीरियस है, लेकिन सेकंड सीजन के अंदर ही शाइन्स लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो, एक काफी ज्यादा. Yeah, like everybody's done an amazing job, but I love the character graph of Purushottam. It's amazing. मुझे लगता है कि काफी लोग तान्या का कैरेक्टर भी चुनेंगे. But it is again well written. Again, like the writers have done like an amazing job for every single character. Like if you see Purnima's graph from 1 to 2, if you see Amira Gaikwad's graph from 1 to 2, you see Sachin sir's characters, Gurav Kaka's graph from 1 to 2. Every single character has just evolved. Even Arvind in just season 2, or even Tanya in just season 2. Yeah. They start from somewhere and they reach somewhere else. So the writing is amazing. Exactly, it was. And I missed Ashish Gaikwad a lot in this season. We did. Yes, we did. Yeah, काफी अच्छा character था वो. Definitely. I think we did see a little bit of him, so that was relief. थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा दिख गए. हाँ, there are a few glimpses. Exactly. Yeah. So मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. फिलहाल यही था अभी के लिए. And I hope you enjoyed the show. Thank
thank you so much, Inderjeet, for having Thank you me. too. Thank you for making me the first guest on your channel. Yeah, And you this are the feels first one. really special. This feels really special, and I really wish you grow heights. And with all the work that you're doing, Thank you. with all the multitasking that you're doing, handling 2 careers, I really hope you see a lot of success. Thank you very much for your words, and I wish you all the luck. Thank you so और much. बहुत ही जल्द मैं आपको देखना चाहूंगा दोबारा स्क्रीन पे. मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ. या सो ठीक है फिर श्रीयम, बाय बाय. Thank you. नाइस मीटिंग यू. Bye, Inderjeet. बाय बाय. Same here. See you. Okay, Bye. bye.